Good morning, students. I am Srikanth sir. I think I no need to introduce myself because all you are well known to me. Okay. So I just here to inform you that I am taking your another subject, that is fundamental of management accounting, and which was earlier taught by Alok sir. And Alok sir already completed your first unit of FMA, that is nature and scope of management accounting. Okay. So we are going with the second unit. Okay. If you have any doubt regarding your first unit, that is nature and scope of management accounting, then you can contact me directly and you may clear your doubts. Okay. So let's start with the second unit. I will introduce something about the syllabus which we are going to study in your second unit. That is, your second unit involves two chapters, that is financial statement and financial statement analysis. That is financial statement and financial statement analysis. These two chapters we are going to discuss in your second unit. So, before we are going to discuss about financial statement analysis, we have to discuss financial statement. Okay, remember this is one of the most important topic, that is financial statement, because this chapter is completely related to your upcoming topic. So, be serious about this chapter, that is financial statement analysis. So, under financial statement analysis, we are going to discuss the meaning of financial statement, the purpose of financial statement, nature of financial statement, types of financial statement, etc. etc. I will discuss one by one clearly. Okay, so let's start with the meaning of financial statement. Okay, I know you little bit know about financial statement, but in this topic, I am going to explain more clearly something about financial statement. Okay, something detailed about financial statement. So, first, what do you mean by financial statement? What is financial statement? A statement which shows the financial position of an organization at the end of accounting period is known as financial statement. Again I repeat, it is very simple to remember the meaning of financial statement. That is, a statement which shows the financial position of an organization at the end of accounting period is known as financial statement. Clear? Now, the question is here arise that you may ask, sir, how financial statement shows the financial position of an organization? Now, let me discuss. In financial statement, the accounts which are included in financial statement, they are arranged in logical order. They are arranged in logical order. That we can say that organized according to logical and consistent accounting procedure. Okay, so क्वेश्चन क्या था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है, हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट shows the financial position of an organization. Okay, so here's the explanation. All the accounting information which are contained in financial statement, they are organized according to logical and consistent accounting procedure. Okay, so let me explain one by one. What do you mean by organized? Organized means properly arranged. Okay, now what is according to logical and consistent accounting procedure? What is the logic behind the incorporation of accounting information in the financial statement? That is the logic. There are basically two logic in the preparation of financial statement. That is, all the accounting informations are divided into two types according to the nature, on the basis of nature. They are called revenue and capital.
revenue and capital. This is what you can say that logical. That means all the accounting information which are appeared in the trial balance, they are in the form of revenue nature, and some accounting information are in the form of capital nature. Now come to what is consistent accounting procedure. That means every financial statement are prepared by following some accounting concepts and conventions. Accounting concepts and conventions. Okay, so I'm not explaining much about concepts and conventions because all you are studying in your first year, that is concepts and conventions. So I am going with what is logical, that is revenue and capital nature. What about the meaning of financial statement? Now, I think you may ask you, sir, why financial statement shows the financial position of an organization? Why not others? Because basically, your financial statements or under financial statement, there are prepared two statements. That means it consists of two statements. That is, one is income statements and another is position statement or positional statement. ओके, समझो अच्छे से इस चीज को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम बेसिकली दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एक हो गया इनकम स्टेटमेंट, दूसरा हो गया पोजीशन स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो अकाउंटिंग के अंदर जितने भी सारे डाटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब कैसे होता है? एक लॉजिकल कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर विथ एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रूव करूंगा कि ये सारे के सारे चीज कैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। सो एज यू नो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इन इनकम स्टेटमेंट we prepare two type of account, that is trading account and another is financial, के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। क्लियर? देखो अभी मैं प्रूव करता हूँ। ओके, इनकम स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट व्हिच शोज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन at a particular period of time is called as income statement. But in position statement, the statement which shows the position of assets and liabilities of an organization at a particular date of time is known as position statement, or we can say positional statement or balance sheet. Now come to under income statement, we have to prepare two accounts, that is trading account and profit and loss account. That means all the data required to prepare financial statement, they all are come from trial balance, and all the data which are appeared inside the trial balance, they are of these two type of nature. That is, some accounting informations are revenue nature, some informations are in capital nature. That means these revenue natures are come in income statement, comes into income statement, and this capital nature item, okay, they are come to positional statement or balance sheet. Okay, so by the help of revenue accounts or revenue nature of accounts, we are going to find the profitability position, and the rest of the items which are in capital nature, they are going to positional statement to find out the position of assets and liabilities of an organization at a particular date of time. Clear? So I think समझ में आ गया होगा कि जितने भी सारे रेवेन्यू नेचर का आइटम्स होता है किसमें, ट्रायल बैलेंस में, वो सारे के सारे हम कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं उसको? इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें दो साइड होता है। डेबिट साइड रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दैट ऑल आर रेवेन्यू नेचर. No capital nature are placed in income statement. Clear? Now all the capital nature items are placed in balance sheet. Okay.
Now, you remember one thing, that is another important point. Remember, income statement is prepared at a particular period of time. Income statement is prepared at a particular. Okay. So remember one thing very important. Okay. Income statement is prepared for a particular period of time, but balance sheet or positional statement prepared at a particular date of time. This is a date of time. Okay. Now you can ask me, sir, what is the difference between period of time and date of time? Let me introduce. Period of time, it means you can prepare income statement during the year at any time you want. That means it may be prepared half yearly, quarterly or annually. Okay, at any time you want, you may prepare income statement. But the position statement or the balance sheet, it is prepared at a particular date of time, that is at the end of accounting period. Okay, next, the validity of balance sheet. The validity of balance sheet is only for 1 day. Remember, the validity of balance sheet or position statement is only for 1 day. It is not valid in previous day or not validated in the next day. So it is prepared at a particular date of time, but it is prepared at a particular period of time. Okay. So I think समझ में आ गया होगा कि what is financial statement. I repeat, financial statement, a statement which shows the financial position of an organization at a particular period of time or at the end of 1 year. That is known as financial statement. Okay, financial statement, all the data which are incorporated in financial statement, they are properly organized and according to logical and consistent accounting procedures. Okay, again, what is logical? That means some parts are revenue nature, some parts are capital nature. Now, come to how financial statement is prepared. Financial statement, it includes two statements, income statement and positional statement. Income statement, under income statement, we prepare trading and profit and loss account to find out the profitability position of the business, and position statement is prepared to find out the position of assets and liabilities of the business. Okay, income statement is prepared for a particular period of time and position statement is prepared at a particular date of time, and the validity of position statement is only for 1 day. Clear? So this is what all about your meaning and introduction of financial statement. Now we are going to discuss about the various nature of financial statement. Okay. Okay. So now we are going to discuss about the various nature of financial statement. Nature of financial statement. Okay. The first nature is data are recorded facts. Recorded facts. समझो अच्छे से. All the data which are appeared inside the trial balance or the data which are need to prepare to financial statement, the all data recorded facts. What does it mean? Recorded facts means all the accounting informations are recorded on historical or actual cost basis. But historical or actual cost basis. Okay, let's see an example. We have purchased a machinery in the beginning of the year for rupees 1 lakh. Machinery purchased in the beginning of the year for rupees 1 lakh. Okay. But at the end of the year, the cost price of the machinery in the current market situation, the value is rupees 80,000. But we have purchased the same machine rupees 1 lakh at the beginning of the year. Now the question here is arise, which cost figure is recorded in financial statement?
Is that record the current market value or the actual cost data? Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम करंट मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे या फिर जिस प्राइस से हम उसको खरीदे थे उसी प्राइस को लेकर हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर क्या है कि जितने भी सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फैक्ट होता है। मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करके उस प्रोडक्ट को खरीदे हैं या फिर परचेज किए हैं उसी के हिसाब से आपको जाना चाहिए। मतलब दैट मीन्स वी हैव रिकॉर्ड अकाउंटिंग डाटा इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ what financial statement. It is all the data recorded in financial statement, they are completely based on recorded fact or actual cost data. Now come to the second point. Summarized figure. Second point, summarized figure. Okay, what does it mean? Summarized means total. As you know that during a business year, various transactions, numerous transactions are happens. Okay, बहुत सारे transactions एक business time के period में होते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो उसका हमें कौन सा फिगर चाहिए? टोटल फिगर, दैट मींस समराइज्ड फिगर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एक साल में बहुत बार हमने परचेज किए होंगे गुड्स, ठीक है, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स हमने परचेज किए होंगे। पर जब उसको हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तब हमें वो जितने भी टाइम हम परचेज किए होंगे वो सारे के सारे परचेज फिगर को एक साथ में टोटल करके एक वैल्यू निकालना होगा, परचेज प्राइस, एंड दैट प्राइस विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज कॉल्ड समराइज्ड और टोटल। क्लियर? सो ऑल द डाटा व्हिच आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे ऑल आर इन व्हिच फॉर्म? समराइज्ड फॉर्म और टोटल फॉर्म। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हम कुछ भी रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसे में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? समराइज्ड फिगर में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, द थर्ड वन, come to this point, interim financial report. interim financial report, देखो एक प्रोडक्ट का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रॉफिट तब पता चलेगा हमें जब वो कंप्लीटली सेल हो जाएगा। मतलब वी कैन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए प्रोडक्ट ओनली दैट टाइम when the product is completely sold out. That means the ownership of the product is transferred to the buyer from the seller. ओके, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है। वैसे ही, ठीक वैसे ही बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तभी पता चलेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा, तभी पता चलेगा कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है। ओके, बट एज यू नो दैट बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दैट मीन्स बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा फॉर्म है जो कि चलता ही जाता है, ठीक है। नो वन कैन डिटरमाइन और नो वन कैन से दैट व्हेन द बिजनेस इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, तब ये बिजनेस बंद होगा, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन every businessman, every business owner want to know the financial position or the profitability position of their business at a particular period of time. That's why, okay, ये जो पूरा का पूरा बिजनेस फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू द एंड उन्होंने क्या किया है, ये बिजनेस को एक टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया और उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द पीरियड ऑफ 12 months. Okay, so when we going to calculate the profitability position and the financial position, okay, in between the 12 months period or from the starting of accounting year up to the end of accounting year, that is the period of 12 months, उसी को कहते हैं कि interim report। क्या कहते हैं उसको? interim report।
ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरिम? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ओके, ये हमें कब पता चलेगा? फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेट, जब बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। पर यह पॉसिबल नहीं है कि हम तब तक वेट करेंगे कि कब बिजनेस बंद होगा और हमें पता चले कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इसीलिए ओके, टू नो द पीरियडिकल परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस, ओके, we are going to calculate the profitability position and the financial position of the business at a particular period of time, and that is called the period of 12 months. That's why the financial report or the financial statement is called interim financial report. समझ में आ गया होगा? Okay, next, the fourth one is accounting कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा जब मैं मीनिंग समझा रहा था तब कि अकाउंटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, ओके, अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी शुड फॉलो some rules and regulations, which we can call that concepts and conventions. That means every financial statement should follow some rules of conventions, okay, when they are going to prepare financial statement, okay. जैसे कि conventions क्या हो गया? ये फर्स्ट वाला चीज recorded fact, okay। जब भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी डाटा रिकॉर्ड करते हो वो कौन सा फिगर में होता है? रिकॉर्डेड फैक्ट। ये एक रूल्स है अकाउंटिंग का या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक रूल है। दैट मींस यू शुड फॉलो दिस रूल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज कॉल्ड accounting conventions. Simply it is a simple meaning that when you are preparing financial statement, okay, you are follow some rules and regulations which are implemented or which are developed for preparation of financial statement, okay. There are so many conventions are there and already you know about that because you are already studied in your first year, so I'm not explaining all the conventions. You should only write what is conventions and why it is followed, okay. If you have any doubt regarding the conventions, then you may ask me, okay. Next, the next point is accounting assumptions. Accounting assumptions, okay. What is assumptions? I think the point number 4 and point number 5 there is no much difference because accounting conventions are show some rules and regulations and accounting assumptions are same just like conventions, some rules and regulations which were followed by preparing financial statement, okay. So what is assumptions? Just like going concern concept, okay, it is an assumption, okay. So how it will be a nature of financial statement? Because when we record some accounting information, just like fixed assets, all fixed assets, they are recorded by following the accounting assumptions, okay. कैसे? जैसे कि मान लो कि बिजनेस में एक एसेट हमने परचेज किया, ओके, कि ऐसा नहीं है कि उस एसेट्स को परचेज किए और जितना भी हमने एक्सपेंसेस किए उस एसेट को परचेज करने के लिए वो सारा का सारा एक्सपेंसेस हम एक ही साल के अंदर उसका रिकवरी हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक एसेट जब हम परचेज करते हैं कि दिमाग में ये रख के हम परचेज करते हैं कि ताकि हमारा बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, ठीक है, एक साल के अंदर बंद हो जाएगा या फिर हमें बंद करना है, ये दिमाग में रखकर हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा माइंड सेटअप ये होता है कि हम इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक चलाते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग assumption says that all the fixed assets are recorded in balance sheet or position statement by the following the rules of assumption, that is called going concern concept or going concern assumptions, ठीक है। now the last one is induced by
और आप लोग ना इसी को एक डिमेरिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इंड्यूस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब जो अकाउंटेंट, ओके, द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज वेरीज फ्रॉम अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट समहाउ। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ेंगे एक चैप्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तब आप वहाँ पे आप देखोगे कि एक एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो रूल्स है, ठीक है, वो बहुत टाइप के रूल्स है। मैं सिर्फ दो एग्जांपल लेता हूँ, ओके। एक है योर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड अनदर वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सो ये दो रूल्स हमें दिया गया है कि आप ये दोनों रूल्स को अप्लाई करके वन ऑफ द रूल, ओके, दोनों रूल में से किसी एक रूल को अप्लाई करके आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब मान लो हमने दो अकाउंटेंट को अपॉइंट किए और उनको ये बताया कि यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ओके। तो क्या गारंटी है कि दोनों ही अकाउंटेंट एक ही रूल अप्लाई करेंगे? नहीं, ये भी हो सकता है कि पहला वाला अकाउंटेंट, ओके, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में जाए और दूसरा वाला अकाउंटेंट वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जाए। तो मतलब यहाँ पे दोनों अकाउंटेंट के जो माइंड सेटअप है वो इफेक्ट डाल दिया किसके ऊपर? द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब ऐसे बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि स्टॉक का वैल्यूएशन, उस मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन भी बहुत डिफरेंट तरीका का है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है, ओके, इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द अकाउंटेंट, ओके, हु फॉलोड सम रूल्स टू कैलकुलेट सम एसेट्स एंड सम अदर accountants are followed some other rules to calculate the same accounting records or same fixed assets. That's why it is somehow induced by personal judgment. आप लोग इसी को एक डिमेरिट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि two accountants are followed two different rules for calculating the same accounting record, then completely it will affect the financial statement. Okay, whatever it is, one of the nature of financial statement. Again, I repeat, the nature of financial statement. The first one is data recorded. Data are completely recorded fact. मतलब accounting में सिर्फ actual data ही record होगा. That means it is not affected by market price. The second one is summarized figure. All the data which are recorded in financial statement, they are in total form. That means summarized form. And the third one is interim financial report. As I told you, okay, interim financial report means financial statement is prepared in the period of 12 months, okay, which we are called the financial year. That's why it is called interim financial report. Now, accounting conventions, these are some rules and regulations which should be followed while preparing financial statement, and assumptions the same, just like conventions, and induced by personal judgment. Okay, these are the 6 points which define your nature of financial statement. So, if you have any doubt regarding this point, you may contact directly and you may clear your doubt. Okay, in your next video class, we will going to discuss about the various types of financial statement. Okay, thank you.